So we started last time. We just had some understanding of how we had an analogy of classical mechanics with quantum mechanics. At the end, we had some relationship, commutation relationship को हमने in the form of brackets लिया था. In today's class, we are going to continue our discussion in that context, that we are going to specify how those commutators, which we represented them in terms of brackets, and what's the relationship of operators. So as we know in the class, apart from कि जो भी classical mechanics and quantum mechanical इसमें क्या relationship है, one thing is that in classical mechanics, in the way we formalize how we represent the equations of motion, whether quantum mechanical equations of motion or classical equations of motion in this form of commutators. So there comes a sort of difference, which can be properly seen the way we try to just relate the operators का how we represent them in terms of operators. So जो हमारे पास एक important property है which is there in the operators is that whether two operators should commute or not. So for example, in classical sense, we know that operators A and B, which is AB minus BA is equivalent to 0, but or rather leave away. So it's you have a typical definition of an operator like this. So if this operators, for example, if we have a canonically conjugate variables, because in quantum mechanics we are more or less interested in conjugate variables, whether it's position and momentum and position, whether it's energy and time, which are formally articulated as uncertainty relationships. So which are which are articulated as which are articulated as energy time uncertainty relationship or position momentum relationship. So how these canonically conjugate variables go in terms of how we can relate them, how the commutation relations can be related vis-a-vis dynamical variables. And yesterday also we had a chart where we had a particular, for example, for a position, its operator representation, coordinate representation was or, in momentum representation it was iota x cross p. For momentum p, there was momentum p, its operator representation was x by I, and in momentum representation was v. So we'll see this position as well as momentum and their corresponding representation in operators. So how the commutation relation turns out once we have this representation in position and momentum. So we'll see how the commutator will turn out to be. The commutator कैसे turn out करेगा. So by allowing operators to act on arbitrary function f, we have so xpx minus pxx. So it's position and momentum, momentum and position. So the commutator of position and momentum, which is on a function f. So how it will turn out? So if you remember, x momentum operator will for position operator it will be x by iota,
So we'll write it here x h by iota into p. Sorry, x iota by h d by dx minus. So here it's h by iota del. Del means d by dx. X is here. Momentum operator is h by iota d by dx minus px. Again we'll do it h by iota d by dx, and so here you will see. So here it's, if it's xf here, it's only f here. So we'll see if we just get it. आप इसको बाहर यहाँ से निकालो. So x h by iota d f by dx minus h by iota d by dx of, so एक आएगा f, and the second one will come out to be minus h by iota minus h by iota d by dx of x. So it will be df by dx will cancel. So it will be x df by dx. So minus this iota, it will be square, it will be minus iota, so it will be iota. Yeah. So this will cancel. So what will come out to be? So it will come out to be this one. This will cancel. It will be iota square. It's minus 1. It will be iota h times f. Will come out to be this function. So it's x, so it will be this iota hf, iota hf. So we'll have x. So you can see it h, but so you can see the commutator did not come out to be 0. So it did not come out to be 0. So you see the commutator जो हमारे पास quantum mechanics का था, it came out to be xf. So xpx minus pxx came out to be iota h cross. So if it's an identity matrix, you can say it for identity matrix. For all identity matrix, it will be iota h. So that's it. So it's a, ये हमारा, it comes somewhat different from the way we study things in classical mechanics. So in the same sense, if it is like that, then commutators x, y, in the classical sense, in the classically conjugate momenta and position, they will conjugate xy is equal to yx, or xy is equal to yx. Sorry, in the same way xpy is equal to pyx, or xpz will be equal to pzx. So you can say xpy minus pyx is 0. Similarly, xpz minus pzx will also be 0. So you can see this is the difference of how we represent commutators in quantum mechanics and commutators in classical mechanics. Canonically conjugate operators which are found in the form of commutation relations. Classical mechanics में इनका value 0 आएगा, and quantum mechanics. So this is one of the difference. So in the same context, there are some couple of properties which you can prove for elementarily. You can prove for these
which may be true for commutator bracket notation. So which means AB plus BA is 0 or AA is 0. So we can check out AB minus BA. So we can check out these different commutation relations. They will come out to be after 1 or 2 pages of rough of algebra. You can try to see that they are true. You can prove them for different commutation relations, which are more or less so it will be A, B, C plus ACB. So for example, trivial case, if you want to see it, so it's AB minus BA plus BA minus AB. So this will cancel. So it's AB minus BA, BA minus AB. So it will be like this. So again, BA minus BA, so it will come out to be for trivial cases. So there are other properties you can check out, and there are more exercises in the book which you can attempt at least attempt and they are interesting. At least the algebra part of it, the algebra part of these commutation relations, which may not necessarily normally in these properties they will commute, but once we see them in the context of quantum mechanics, they may or may not commute. Where they do not commute. So if they do not commute, it will be interesting exercise to see how these exercise on within the context of these bracket notation. Now we are going to do an important thing here in today's class is that we are going to study. We are going to study. We are going to study Schrodinger equation. Once we had earlier a time-dependent Schrodinger equation. Now in this class we are going to have we are going to have a study of come be on the time. So in today's class, we are going to have stationary solutions of time-dependent stationary states and general solution of the wave equation. So previously we had a Schrodinger equation, time-dependent Schrodinger equation. The time-dependent Schrodinger equation was iota h d psi by dt came out to be h square by 2m del square psi plus v times x y z. How the wave function psi evolved. The way we had an analog in the Newtonian mechanics. So in today's class we are going to have a general solution of this wave equation, if that's a wave equation. ठीक है? तो अब ये है कि general solution ये है कि the way you solve a differential equation, you have a general solution and then you have a particular solution. For example, for different values. So we'll try to study this Schrodinger equation in its general possible sense, then see how it will इसका solution in different cases कैसे evolve करेगा, ठीक है? Whether the solution may be time dependent or whether it may be time independent, whether it's explicitly dependent on time or not, ठीक है? Time के साथ कोई wave कैसे state evolve करेगी space time, or
without time, how it will be like that. Then we have to give different values. 5 मिनट के बाद जिस तरह न्यूटन मैकेनिक्स में करते हैं ना, where the particle will land after 5 minutes under this force, 10 minutes, ठीक है, 15 minutes. तो you have here this state psi. इस psi का evolution हमको दिखना है. When you say psi in terms of x and t, subscript में जो x and t है ना, its dependence on space coordinates and its dependence upon time coordinates. जो पहली श्रोडिंगर इक्वेशन थी हमारी, it was like this: d psi by dt is equal to h square by 8m del square psi plus v x y z. So what does it mean? Space derivative, इसका time के साथ evolution is dependent upon second order differential in space. It's basically what? d2x by dx square plus d2y by dx square. So it's second order difference. Its evolution in time depends upon जो psi का evolution. It's a sort of wave equation. So ये हमने निकाला था time dependent Schrodinger equation. Now in the general solution which we are going to study, so if you write this equation iota h d psi by dt का form हम लिखेंगे in terms of h psi. तो h है ना, h को हमने we wrote this h is equal to h square by 8 pi del square psi plus v x y z, है ना. So you can write this iota h d psi by dt को हम, h is the Hamiltonian, we know it's the total इसके बराबर, ठीक है. So if it is that way, तो if the system is conservative, if the system is conservative, then what? Then the Hamiltonian जो है हमारे, Hamiltonian normal ये है total energy of the system. It will not necessarily depend upon the shower. अगर system conserved है, तो it will not depend upon the total energy of the system, because total system की energy conserved है ना. जैसे number of molecules in the room maybe, या number of people in the room maybe 5 or 10. टाइम के साथ हम चलेंगे या वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, रूम में ही रहेंगे ना, ठीक है, इन अ क्लोज सिस्टम, नॉट इन एन ओपन सिस्टम, ठीक है. सो इफ इट इज दैट वे, इफ द सिस्टम इज कंजर्व, व्हाट वी कैन से इज दैट, सो H does not necessarily depend upon T. Hamiltonian does necessarily depend upon T. So we can say जो हमारे पास psi of और t है, basically psi है ना wave function, it's a wave का superposition, different waves का superposition हमने in terms of Fourier series निकाला था, ठीक है. but psi का हमने लिखा था in terms of exponential, or if you want to write this Hamiltonian यहाँ पर, which we are represented like this as a sine wave और जो भी है wave, so it will be minus iota by h, iota by h of t psi of r 0. Psi of r 0 means that it doesn't have necessarily explicit dependence on time, ठीक है. So आप differential equation कर देना, कोई particle starts from rest और particle is already in motion, then इसकी acceleration होगी, दो states होगी ना, you can take it that way. So it doesn't have an explicit dependence on time. तो ये भी एक हमारे पास इसका एक solution आएगा. अब इसमें जो Hamiltonian है, exponential of this Hamiltonian, so इसका मतलब ये है, it's a sort of differential operator. Yesterday I also said operators, operator हमने कहा था ना, operator क्या हो गया, operator x, जिस तरह हमारे पास differential function है, it gives derivative, integration will give the function back. In the same way, quantum mechanics में you operate on a function, that function may be psi or whatever that's, ठीक है. अब वो under the operator formalism how things will evolve. So in the same way, जो ये operator h है, h Hamiltonian है, it's sum of differential operator. So h is sum of differential operator which is kinetic energy T and potential energy. It's total energy of the system. Hamiltonian normally होती है total energy of the system. अब ये Hamiltonian not less, अब ये
it's not that you will add them. देखो ना, for example e to the power x plus e to the power y, है ना, आप करोगे ये x plus y. It's not like that. You cannot have a functional dependence of this Hamiltonian operator. You cannot add them like the simple rules of additions होते हैं ना. You will add because it's something evolving in space and time. This psi function, ठीक है? So simple rules जो h के अंदर क्या है, so which will let it be clear what things will be. So हम एक general observation करेंगे. We'll make a general observation. General observation is that for any initial state which is represented by eigenfunction. तो फिलहाल आप याद रखो व्हाट्स eigenfunction. इसका आप सॉल्यूशन निकालते हैं, मैट्रिक्स सॉल्यूशन निकालते हैं. When you solve some matrices, तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड which will solve that जो भी है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं या आइगन वैल्यू निकालते हैं ना. सो इन द सेम वे कोई भी स्टेट साई है ना, उसका कोई सॉल्यूशन होगा ना स्टेट साई एट टाइम t, हाउ इट्स गोइंग टू इवॉल्व. ठीक है, कौन सा वैल्यू मिलेगा इन द इवोल्यूशन. तो अगर स्टेट साई है, आइगन फंक्शन साई है, which corresponds to this Hamiltonian operator. ये Hamiltonian operator क्या function क्या वैल्यू होगा, तो it will generate not one solution but will generate class of solutions, है ना. जैसे कोई है ना और रेडियस 1 सेंटीमीटर एक सर्कल जनरेट हुआ for 2 others, so it will generate for a particular value of x, so it will generate class of different solutions. ठीक है, for different values. तो उसी को हम कहेंगे फॉर, so we'll say that eigen function psi e eigenfunction psi e and eigenvalues of e and h are eigenvalues. So which means that h psi हमारे पास ये है shall be equivalent to e psi r. So for a particular जो h है ना, h कैसे इवॉल्व करेगा, which will depend upon this how exponential of this function है ना. ये waves है ना, so different waves का superposition जो wavelet में आता है. So it may not be one value, it may be class of values which are generated, which will correspond to this function psi. ठीक है, so we will have a dependence of h psi on the left hand side and e psi on the right hand side. So this is eigen function and this is eigenvalues, which value it will take for a given function. ठीक है, so it will not be one, it may be a class of values. जिसमें हम initial conditions है ना for न्यूटन्स में लॉ में करते हैं ना, t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 1 पे कुछ होगा, t पे 2 होगा. If you increase t is equal to initial value आप different करेंगे तो final value भी different आएगा, final value भी different आ जाएगा. So we are seeing the evolution of wave function psi in this Schrodinger equation. ठीक है, which will correspond to different eigenvalues, which will give different eigenvalues for different eigenfunction. And eigenfunction की dependence हमने ऐसे की है in terms of exponential function this. ठीक है, so this is, so इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे. If we want to write it in terms of हमारा जो अपना है, we are coming back to where we started, h square by 2m del square psi e plus v of psi e, है ना. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये हैमिल्टोनियन. दिस इज द ओरिजिन वेयर वी इक्वेशन स्टार्टेड. इसका वैल्यू श्रोडिंगर इक्वेशन का, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, बट राइट हैंड साइड में वी आर नॉट राइटिंग आयोटा h d psi by dt, वी आर राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन एज एन एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस फंक्शन.
ठीक है, सो इट विल कम आउट टू बी ई साइन, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज, सो इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है ये भी हमारे पास, बट ये वाली जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इट्स नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। जो हमारे पास यहां है ना, आप देखो यहां पर एक्सप्लिसिट ओरिजिनली वी स्टार्टेड विद द दिस इज टाइम डिपेंडेंट, द टाइम इज एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व, सो वी हैव नॉट डन दिस, वी हैव टेकन a particular value of psi of x 0 and taken इसका form of h, so h will evolve as exponential of this psi of r 0. So here there is no dependence on time, explicit dependence on time. Implicit तो है नहीं, explicit तो है नहीं, explicit dependence of time यहाँ नहीं. So this is known as time independent Schrodinger equation. So you have to start from a general, we start with time dependent Schrodinger equation, then we can construct general solutions of a Schrodinger equation, and from that you arrive at time independent Schrodinger equation, ठीक है, so it's also an interesting exercise how we can go from one to another, that's it. अब हमारे पास है कि जिस तरह आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, आपने 5-6 मेथड्स किए हाउ टू सॉल्व इट किया है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आप वहां फिर करते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, कभी करते हैं mx plus ny is equal to कुछ, फिर करते हैं dm by dy is equal to dn by dx, है ना, whether it's an exact differential or not, ठीक है, वहां पर मकसद आपका है कि हाउ यू सॉल्व ए पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या जिससे पार्शियल डिफरेंशियल होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में वन वेरिएबल होगा, टू वेरिएबल, जो भी है, बट एट द एंड हमारा मकसद क्या है, टू सॉल्व इट इन ए पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस मतलब क्या हो गया, सो यू आर इंटरेस्टेड इन ए पर्टिकुलर पार्टिकल, जैसे अर्थ है, इसका जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट आप कहोगे कि 5 दिन के बाद वेयर इट्स रोटेशन विल बी, ये कहां पर एग्जैक्टली लाई करेगा एट दिस टाइम, ठीक है, इफ अर्थ इज अप्लाइंग हैविंग अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ऑन दिस या कुछ, सो यू एग्जैक्टली कैलकुलेट इसकी ट्रेजेक्टरी, एग्जैक्टली आप कहोगे 5 दिन के बाद कहां पर है, सो दिस मींस यू आर स्टार्टिंग विद द जनरल डिफरेंस लॉ which is Newton's law, but once we concretely are going to solve it for a particular time. So in the same way we have a form, whether it's time dependent Schrodinger equation or time independent Schrodinger equation. अब हमारा काम है कि actually solve it for particular values, ठीक है, that is the aim of, अब जो हमारा next solve this book है, it will be solution of these Schrodinger equation, ठीक है, for different initial value problems. Initial value problems मतलब, for example, sometimes we are taking time as 0, so it may not necessarily be 0, ठीक है, that's it. तो अब हमारे पास जो है, so if the initial state if the initial state which is represented by the eigenfunction psi er of h, the time independent wave function becomes psi of r t। आप देखो psi of r t को हम निकालेंगे ऐसे, exponential of जो हमारा अभी था h, which I just rubbed off, it will be minus iota by h e of t। अब e यहाँ h था, हाँ यहाँ h था, so we are trying to write h in terms of energy, ठीक है, एनर्जी बेसिकली ये वाला, ये हमारे पास जो है, ठीक है, दिस फंक्शन, यहाँ साई भी है, यहाँ दिस ऑल्सो भी है, सो अब ये एनर्जी है, सो इट्स साई ई आर, ठीक है, सो
इट विल बिकम ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। कोई भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, जैसे कि आयोटा एक्स या एक्स करोगे, इसको करते हैं ना ऐसे, आप dx इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा e टू द माइनस एक्स माइनस प्लस सी, है ना। c इज सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इफ c is 0 then it will be 0, है ना। So it's 1, so c is 0, हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में c is equal to 0 means the particle has started from rest. So now we have to solve this differential equation जिसका एनर्जी फॉर्म ये है, इसका evolution in space time क्या आएगा. So we are going to sort of integrate it in that sense, such that हमारे पास जो functional dependence है, functional dependence of psi eigen value, eigen function होगा functional value of psi of ER. ये पर हमारे पास कंडीशन थी. अब देखो, अब यहां पर मसला ये आ रहा है, जो ये psi है ना E फॉर डिफरेंट टाइम्स, एक t1 पे लेंगे वैल्यू, एक बेसिकली दिस साइज जो है ना, इट्स सुपरपोजिशन ऑफ दोज वेव्स, वो जो वेवलेट बनाता है, ठीक है। अब ये जो एक वेव आगे जाएगा, एक वेव पीछे जाएगा, इसका जो सुपरपोजिशन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सुपरपोजिशंस ऑफ, अगर हम सुपरपोजिशन ऑफ सेपरेबल सॉल्यूशंस करेंगे, सॉर्ट ऑफ जिस तरह आप डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बाय सेपरेबल मेथड करते हैं ना, सो यू कैन सी इट दैट वे. सो बट अब हमारे पास ये है कि इफ यू रिमेंबर, हमने स्टार्ट में ही कहा था, जो नेट वेव फंक्शन है ना रो इज इक्वल टू साई स्टार, साई इज इक्वल टू 1, हाँ ऐसे. If you remember, रो हमने कहा था ऐसे, रो is going to c psi star psi, so or that's equal to 1 means total probability of the system, this is conserved in an isolated system. So in the same way, the wave function psi है, it will be in a closed system, it will be conserved. या equation of continuity हमने लगाया था that d by dt of in the three-dimensional space, psi will come out to be closed. It will come out to be जितना बाहर जाता है उतना ही, हाँ yes. So taking that understanding here, तो जो रो है, रो will be, अब देखो यहाँ पर, it will be psi star r t, psi r t, है ना, psi star. That will be psi square. That will be probability. That should come out to be 1. But यहाँ पर जो psi and psi star का value, it's a sort of wave function. यहाँ पर minus iota h at value e and e star t. So at e and e star. जो साई स्टार का वैल्यू एंड साई का वैल्यू, जिसका हम कहते हैं साई स्टार इज साई स्क्वायर, दैट्स द प्रोबेबिलिटी, दैट्स इक्वल टू 1. सो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं रो विल बी evolution of wave size psi star, but it's at e and at different times, e and e star. इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा, सो इट विल बी psi star r t psi of t, sorry, must satisfy the condition this. ये वाली इक्वेशन है ना, इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन. कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, रो इज इक्वल टू सी psi star psi, दैट्स इक्वल टू 1, दैट्स इक्वल टू 1. अब ये है कि जो ये इक्वेशन है 3.69 इज दिस इक्वेशन.
So what he is saying that this equation or what the if you say it's purely oscillatory. Oscillatory क्यों है शाबाश? ये है ना एक्सपोनेंशियल ऑफ कोई भी फंक्शन है ना, e टू पावर माइनस एक्स है ना, इफ यू इसको आप ग्राफ पे डालोगे ना ये ऐसे आएगा ना, और इसका cos x प्लस sin x है ना, e टू पावर x है ना cos x प्लस, तो cos x sin x को कैसे ग्राफ आएगा या ऐसे आएगा. So that's what he is saying. So ये कह रहा है कि psi जो हमारे पास है टाइम डिपेंडेंट फैक्टर इन 3.6 टाइम डिपेंडेंट फैक्टर इन दिस मेक्स इट प्योर. अगर इसका टाइम का वैल्यू लेंगे हाउ दिस वेव फंक्शन psi इवॉल्व्स इन टाइम, इट विल बी सॉर्ट ऑफ ऑसिलेटरी फंक्शन. ठीक है. So this justifies that t is in time. So it will differ by time of constant phase. अगर हम लेंगे ये हमने लिया ना E and E star at different, एक वेवलेट इवॉल्व करेगा एक साई E star पे, दूसरा करेगा कम या ज्यादा होगा ना ये फेज फैक्टर, that may be constant. This is what he is saying. अब ये है कि we'll start with how we can generally solve this very equation. We are beginning to it, but for a particular case जिसमें constantly evolving to oscillatory waves हैं, which might have a constant phase. So ये कह रहा है कि this justifies occasional designation of special vector CER as time independent wave function. So what he wants to say is that क्योंकि हम अगर मान लेंगे कि इनका कांस्टेंट फेज है, ठीक है, देन यू कैन से यू कैन जस्टिफाई इट एज टाइम इंडिपेंडेंट. अदरवाइज ये टाइम डिपेंडेंट है, सॉल्यूशन टाइम डिपेंडेंट है. बट अगर हम कहें कि बिटवीन टू पल्सेस, टू वेव्स, ऑसिलेटरी वेव्स हैं, इनका कांस्टेंट ये है, फेज डिफरेंस है, यू कैन टेक दिस एज सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट एंड व्हिच विल नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ऑफ time, and which will justify it as a, or an approximate sense, it's a time dependent wave function. ठीक है, time independent. We are not studying time, ये होगी time dependent, because we are studying time independent wave equation. But since यहाँ t आ रहा है, ठीक है, but we are saying that for constantly slight phase difference we can justify it like that. ठीक है, so this is one way of looking at it. अब हमारा काम है at the end we are going to find the expectation value. Expectation value जो करके आएगी, ठीक है. How to find the expectation value? Expectation value क्या है? जो because in quantum mechanics we don't talk of certainties, we talk of probabilities. Average value कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो average value of these states psi, how they उस पर वो इवॉल्व कैसे करेगी. सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने कल भी कहा था हम कैसे निकालते हैं उसको. फंक्शन यहां से साइ रखेंगे एंड सम फंक्शन फॉर एग्जांपल ए जो भी है इट्स सैंडविच्ड बिटवीन द टू पोजीशन स्पेस में होगा या मोमेंटम स्पेस में. दिस इज द वे वी डिटरमाइन दिस थिंग. तो अब हम फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है ए फॉर एग्जांपल, हाँ 1 सेकंड दो स्टेप्स. So if there is a function a psi star r t, तो ये निकालेंगे कोई भी फंक्शन psi r t d3r. It may be in position space or it may be in momentum space. तो जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास हैमिल्टोनियन है ना यहाँ पर h. तो हैमिल्टोनियन का will sandwich it between psi star अपना h psi e और d3r. बट हैमिल्टोनियन यहाँ पर राइट हैंड साइड हमने इसको e लिखा है, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू e.
So where E is the expectation value of the energy of the state. So जो हमारे पास जो जनरल नाउ आई कम एट द एंड, सो जो इक्वेशन हम याद रखने की है, psi r t will be equivalent to exponential of r minus iota by h e t psi e r, which have the properties of rho is equivalent to psi r t square. So this is a इसको हम कहते हैं, it's a sort of constant in time. We have taken two pulses with a constant phase difference. So that's why these are known as stationary states. ठीक है? As solutions, they are known as stationary states. So this we have studied time independent Schrodinger equation, but यहाँ पर for constantly these pulses are constant phase factor की वजह से, which will have a resemblance of as if we are studying time independent Schrodinger equation. उसका expectation value ये है and which will correspond to the stationary states. ठीक है? So this is one of the solutions. Now we are going to see the whole quantum mechanics में एक तरीके से ये है कि it's basically how we solve Schrodinger equation in different cases. जैसे न्यूटन मैकेनिक्स 11-12 में आप पढ़ते हैं, इट्स सोल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू n, ये डिफरेंट केसेस में कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है? हियर वी हैव टू सॉल्व वेदर इट्स टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, डिफरेंट, सो विल स्टडी इन दोस कमिंग क्लासेस. ठीक है? चलो.